हेलो, वेलकम टू द फ्राइडे कैचअप। हम लोग का लास्ट एपिसोड है. इट इज आवर सीजन फिनाले. आई नेवर थॉट आई वुड यूज वर्ड्स लाइक सीजन फिनाले, है ना. इट जस्ट साउंड्स रियली लाइक ओके, बट वी आर सो एक्साइटेड. हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हमारे पास एक एपिसोड रह गया है. लाइक हम थक बहुत गए हैं, बट वी आर लाइक इन वेरी हाई स्पिरिट्स अबाउट द फैक्ट दैट यू नो वी मैनेज टू डू दिस. हम कितने अरसे से सोच रहे हैं इसके बारे में यार. लाइक वी बीन वर्किंग ऑन इट सिंस exactly a year. Since we started talking about it. But we started talking about it even before that. We started working on it a year ago. शुरू हमने कर दिया था पहले ही. लेकिन उससे आज तुम जब फ्रेम सेट करी थी, रोज में यहाँ मुझे बैठाती है और फिर ये फ्रेम सेट करती है. मैंने कहा this is the last time we are doing it. At least hopefully for a while now. तो I hope कि हमारा last episode जो है वो जरा मजे का हो. Like all our episodes, hoping. Anyway, very excited. और कहाँ से शुरू करें? आज तुमने कुछ खास एहतमाम किया है मेरे लिए. हाँ, आई थॉट आखिरी एपिसोड की चाय हमारी शाम की जरा वो चाट और समोसों में, वी केप्ट इट वेरी सिंपल. हमने कहा बस 2 आइटम्स लेंगे, बट वो वाले जो हम एक्चुअली बहुत एंजॉय करते हैं. लाइक चाट आई थिंक इज लाइक अ कॉमन फेवरेट. आई थिंक एवरीबडी लव्स चाट. एंड देन जस्ट सम समोसास एंड चाट पे जरा पापड़ी वापड़ी डालेंगे, चटनियाँ मिक्स होंगी. अच्छा, वो नहीं होता जब आप कहीं जा रहे होते हो तो वो कहते हैं कि हम कहते हैं तकल्लुफ ना करना, वो कहते हैं नहीं हम बस 2 चीजें बनाएंगे. जब जाते हो तो 6 चीजें होती हैं, तो हम वो वाले हम वो लोग ही नहीं है. 2 चीजें तो 2 ही चीजें. अगर बताया हमने 2 होंगी तो 2 ही होंगी. बट थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमारी चाय है. आज फिजा ने फिर से ब्लेस किया है हमें एपिसोड की चाय बना के. अभी मुझे नबील ने कहा सिखा के जाना. हाँ. हमने बाय द वे इस पे बना ली है स्टोरी. सो आई विल शेयर व्हेन आई मीन इट्स अ रेगुलर चाय रेसिपी, बट आई थिंक दैट यू नो चाय के कल्चर, देसी कल्चर में बात ही सारी है दैट एवरीबडी हैज दिस one small different way of making their chai, and I just find it very interesting to see कि हर कोई क्या वो चीज़ different करता है. So it's I feel like chai also belongs to your home in that way, right? Are you particular about a good cup of like your cup of chai जो तुम्हारे मतलब की हो? हाँ, मतलब I want the taste and the कितनी strong है. I don't want a very light chai. वो है, but I can enjoy and appreciate जो लोग उसी के range में different तरीकों से जो बनाते हैं. But हाँ, of course on a daily basis I have that one comfort taste कि मैं जैसे टपाल दानेदार ही I will have, and दूध भी मैं एक certain quantity का ही डालती हूँ. तुम्हारा है इसमें इतना particular? हाँ, I am. मतलब मुझे होता है कि जब मैं कहीं जाऊँ और मुझे कोई कप मतलब and मुझसे कहा भी नहीं जाता. and I'm just like नहीं, इसमें दूध बहुत ज़्यादा डल गया है या वो रंग वो नहीं आया. But chai is something that I feel like I'm a very easy person. मतलब कोई भी सामने कोई चीज़ रख दूँगा मैं खा लूँगी of course, but chai has to be a certain way for me. और पता है मेरे लिए चाय ना is kind of like that. It's I think हमने पहले भी बात की थी, but it's just so much more than a cup of tea. Like for Nabil and me to sit together, it just creates that environment कि हम एक गप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं, दिन के एंड में कैचअप कर रहे हैं. With you हम फोन तक पे चाय एक साथ we'll do, right? तुम भी चाय बनाओ, मैं भी चाय बनाऊँ. So I feel it holds like this warmth and this अपनायत का idea for me कि you know it's just more than just a beverage. तो भाई 1 सेकंड शुरू करने से पहले चार्ट निकाल ले यहाँ पे. जी बिल्कुल. हाँ, तो मैं निकाल के देती हूँ. थैंक यू. अच्छा, आज हमारा फिर लास्ट एपिसोड है, तो हम क्या बातें करें? अच्छा, हमने सोचा कि क्यों ना हम बात करें अबाउट ब्यूटी, ब्यूटी विद रिस्पेक्ट टू लाइक सोशल मीडिया, बिकॉज आई थिंक वी एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ आवर आइडियाज ऑफ व्हाट ब्यूटी लुक्स लाइक फ्रॉम द इंटरनेट. एंड ऑल्सो फिर उसके अंदर हम ये सारी बातचीत भी करें लाइक इंस्टाग्राम फिल्टर्स वगैरह, यू नो, बिकॉज आई थिंक आजकल बहुत रेलिवेंट है. एंड आई हैव ऑल्सो बिकम रिसेंटली क्वाइट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि चम्मच एक ही है. I've become aware of the fact that it's not just कि women who are my age are following me. अगर मैं अपने सिर्फ प्लेटफॉर्म को देखूं, very young girls also following me, you know. मुझे कभी कभार 13-14 साल की लड़कियां भी मैसेज करती हैं. Yeah, and I know that you know everybody should live life authentically, you know, the way they feel best. But I also feel कि जब आपके पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस आ जाए जिसके अंदर इतनी छोटी एज की बच्चियां भी हैं, ठीक है, तो they are very impressionable. They are. And no matter what we say कि you know I'm just here chilling on my space, जो भी है, you do, there is a certain level of accountability. Absolutely. And I just like us to kind of think about कि क्या किस तरह हम इसको बेहतर मैनेज कर सकते हैं. Because अगर आप सोचो तो पूरी दुनिया में
किसी भी चीज़ को यूज़ करने के कुछ रूल्स, कुछ बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, बट विद द इंटरनेट इट्स दे आर नो गाइडलाइन, इट्स ऑल लाइक ओपन. सो I'd love us to kind of just explore it and just put this on the table and kind of think about even वो चीज़ें जो हमें लगता है बड़ी chill हैं, easy हैं, उनके क्या consequences maybe 5 years later, maybe 10 years later, ज़्यादा deeper तो नहीं है जितना हम समझते नहीं हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है टॉपिक. अब आप बताएं. मैं सोच रही थी कि हमने आई थिंक हर एपिसोड में कोई ना कोई सोशल मीडिया के बारे में हल्की फुल्की बात की है, और हम उस दिन यही डिस्कस कर रहे थे किसी एक एपिसोड में कि पता नहीं एपिसोड में डिस्कस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे कि अब सब मर्ज हो चुका है. दिमाग में कुछ याद नहीं है कि ये बात कोई बात यहाँ हो रही थी कि वहाँ हो रही थी, कि ये जो कल्चर बन रहा है सोशल मीडिया. डाल दो पापड़ी भाई, प्लीज डाल दो. ठीक है, प्लीज चटनी भी डाल देना. हाँ. कल्चर, हम सोशल मीडिया कल्चर बहुत एक लूजली बात कर लेते हैं सोशल मीडिया कल्चर, बट वो कल्चर एक्चुअली हर रोज बन रहा है, और जितने कंटेंट क्रिएटर्स और जितने फॉलोअर्स हैं वो सब इसमें शामिल हैं, इसकी कंट्रीब्यूशन में, राइट. तो वही वाली बात थी, क्योंकि इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो मैं हमेशा एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचती थी, अपने पर्सपेक्टिव से, एज अ 40 समथिंग, राइट. But now I have another reference point in my house, which is my preteen daughter. Yeah. You know, and although she is not on Instagram, she doesn't have Yet, she doesn't have a profile on Instagram, a presence on. But what she watches is these YouTube videos of, for example, she draws. तो जो आर्टिस्ट हैं जो ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें से भी she gets influenced कि कौन से पेंट्स लेने हैं. You know, बस यही पेपर अच्छी ग्रामेज का है क्योंकि, और मैं से कभी कभार क्वेश्चन करती हूँ कि स्पेक्स ले लो. Why does it have to be the same thing? Yeah. And I can see that right now it's not beauty related. It's something else. But that influence is coming, even at the age of 11. So we cannot discount that. We cannot say कि ये चीज़ें बस harmless हैं. I don't think everything is harmless. And I think हर एक, जैसे तुम कह रही थी, हर एक चीज़ के consequences हैं, हमें आज नज़र नहीं आ रहे. But आज से 10 साल बाद ये generation एक बिल्कुल अलग से एक influence के साथ निकलेगी, right? And जैसे तुमने बोला ना कि everything is not harmless, also doesn't necessarily mean that it's harmful. Oh, yeah. But we need some stuff to watch out for, to just be aware, you know. तो इस पे करते हैं फिर बात. करें शुरू. अच्छा listen, तो ऐसा करते हैं. Let's go back to the beginning. Why don't we start from where your idea of beauty came from? तुम्हारी बचपन से, मतलब तुम्हारी इनसिक्योरिटीज थी कोई, कैसी क्या थी, तुम्हें ब्यूटी का आइडिया क्या था दिमाग में? यार इनसिक्योरिटीज तो ठीक ठाक थी. मतलब किसको नहीं होती वैसे. हाँ यार काफ़ी ठीक ठाक थी. मुझे लगता है कि अब मुझे याद नहीं कि एग्जैक्टली किस एज पे शुरू हुआ, बट आई वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ, फॉर एग्जांपल आई हैव अ राउंड फेस. और बचपन में सब कहते थे बेबी चीक्स, वो चीक्स पुल हो रही हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता था, बट मैं कुछ कह नहीं पाती थी. बट हमेशा मुझे लगा कि आई हैव अ फुलर फेस. ठीक है. एक अपनी हाइट का भी मुझे होता था कि यार आई थिंक द शॉर्टेस्ट इन माई फ्रेंड सर्कल और द शॉर्टेस्ट इन द क्लास. पहले इस चीज़ में बड़ी प्राइड फील होती थी कि जब क्यू बनती थी सबसे आगे हम होते थे. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला दैट मे बी, एंड अगेन बिकॉज, एंड यू नो दैट्स व्हाई व्हेन आई से कोई पूछता है तुम्हारी हाइट क्या है, तो मेरी टेरिटोरियल अबाउट दैट हाफ इंच. आई एम 5'2.5", but that half पे I'm clinging to that half, maybe because I was just aware that being short is probably not a good physical trait to have, and that all came from the exposure that we had. मतलब my mummy was very basic and she still is, like never had makeup, never wore makeup, but obviously when you're watching dramas या वो उस ज़माने में मैगजीन्स होते थे, आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे देखना शुरू किया, तो वही मैंने किसी और एपिसोड में भी बात की कि जो वो मॉर्फ होता है आपका एक सेंस ऑफ फिजिकल सेल्फ, सिर्फ फिजिकल सेल्फ की बात करी होता है, तो वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका होता है. क्योंकि अगर आप अब हो रहा है ना कि आप थोड़ी इंक्लूसिविटी आई है, पहले तो हर लीड स्टार would just be just pretty, would have really nice hair, would be thin, would have a certain complexion, would have a certain height, would look good wearing all kinds of clothes. So somehow आप कर नहीं रहे होते एक्टिवली, लेकिन कॉन्शियसली whenever you look at the mirror or whenever you look at yourself, you will just pinpoint 2-3 things that you don't like about yourself. और ये मेरे साथ हुआ है throughout adolescence में हुआ है, when I was a teenager में शायद इतना नहीं, क्योंकि तब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था. लेकिन when I went to Kinnaid, I knew that, oh, this is what pretty looks like. So, when you're in an all-girls college, और दीदी लड़कियां हैं वहाँ पे, especially when you're a first year, but the third and the fourth years are like really stylish. तुम्हें याद है? बिल्कुल. उनका एक अलग होती थी. आपको पहली बार एक ऐसे environment में आए हो जहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, and now you want to like look pretty. That's so true. I remember. There was a uniform in Kinnaid. बिल्कुल. So, and then you would look at the fourth years and how they carry themselves. So automatically, I think वो बनता ही चला जाता है. वो develop, वो एक main चीज़ बनी, फिर उसके ऊपर add on हुआ, and somehow, there comes a point that no matter how much you dress up,
you will look in the mirror, and even though you may look that you are looking nice, you will still have 2-3 things that you just don't like, right? और इसलिए मुझे लगता है कि compliments भी हम नहीं accept कर पाते. मुझे पता याद है कि जब कोई मुझे कुछ कहता है, अच्छा यार ये बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं but ये नहीं अच्छा लग रहा, you know, हम उसको फौरन से या नहीं यार, somehow there's like a not a mistrust in what the person is saying, but the mistrust in the fact that you can also look good as a whole. Discomfort with accepting that you could be looking nice. Yes. Yes. और एक चीज़ तो मैं अभी भी एडमिट करूँगी कि जैसे ये मुझे होता है कि ये गुड साइड है और ये गुड साइड नहीं है, राइट? अ गुड साइड एंड द बैड साइड, द प्रॉब्लम एरियाज, राइट? सो अनकॉन्शियसली हम लेबल करते चले जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ आवर बॉडीज दैट आर not good. We'd rather have it the other way, right? We'd rather have like a tinier waist. So even with gratitude and acceptance and all those good things, I feel I'm still not there. I will be very honest. I'm still not there when I look at myself, and I'm working on it. But there are days when, especially that happens in the trying rooms. When I go to a mall, if I'm like trying to shop for myself and something looks really good on something, like not mannequin because those are just crazy, like not, क्या कहना चाहिए उसको? Not mannequins, but आप देखते हो कहते हो हाँ ये मुझे शायद अच्छा लगे. You go to the trying room, it just doesn't look good. The first thing, यार अभी भी, you know, I've been working out or whatever, अभी भी ये problem area, and you know like वो resentment आ जाती है. So I feel like I am way better than how I used to be, but I don't think I'm there yet. How about you? तुम्हारा क्या सीन था बचपन में, अब any insecurities and how you've evolved? अच्छा यार मेरा तो ना I've talked about this on my blog also a few times. मैं तो बहुत I was very shy and awkward. Were you shy and awkward as a kid or no? You were okay? No, I was okay. ठीक है. So मैं काफ़ी shy थी. I was like the quietest person in any room and I was very awkward also उस तरह से कि you know कुछ करना नहीं आता और अजीब सा सलाम कोई करने को बोला था करके you know. So like that. तो उन चीज़ों पे तो होता ही था but physical attributes में मेरी height पे like you said because we have the same height 5'2" and a half तो उस पे भी बहुत bullying होती थी. In fact up until my mid-20s in university you will not believe a friend of mine asked me कि यार तुम्हें अजीब सा नहीं लगता, कैसी लगती है तुम्हें दुनिया, सीरियस, दिस इज नॉट अ जोक, इससे तुम्हें अच्छा वो नहीं लगता, अजीब नहीं लगता कि तुम इतनी छोटी हो, मतलब doesn't it feel weird to you? And I didn't even have any answer at that time. I think what happens is with time it's not that the insecurity kind of just goes away because you are short, right? But I think you become so sure of yourself as you age that other things become really big, you know, and then these things stop mattering. So मेरे लिए height और वो चीज़ें जो पहले एक होती थी वो मेरे लिए अब बिल्कुल भी वो वाली concerns नहीं है. But जो तुम बात कर रही हो ना about the overall concept of beauty, I think I completely get what you're saying. I think despite being so old, and I think for women because of our ecosystem as well as you know हम जिस तरह की चीज़ें absorb करते हैं, the idea of beauty itself is not harmonized with all of us, you know. हम लोग इसको या तो avoid कर रहे होते हैं, escape कर रहे होते हैं या obsess कर रहे होते हैं इसके ऊपर. And जैसे तुम अभी कह रही थी कि it shows in how we take compliments and I think it also shows in how we kind of perceive aging because हम ऐसे भी कहते हैं ना कि यार अब कुछ नहीं, even people who accept aging sometimes they'll say कि यार अच्छा what choice do we have so let's just embrace it. It's not really about कि और कोई choice ही नहीं है तो you embrace aging, you know. So these things are because of the fact that we haven't harmonized the idea of beauty with who we are, and I think it's just all linked back to the fact that we start to believe or we believe that I would feel so much better about myself if, let's say, my skin was fairer, or I had less pigmentation, or I had more hair, or that I think my worth would be higher in society. Especially because अगर आप देखो the way women get married in our society, लड़कियां वे की जाती हैं in terms of their skin tones or their heights or their बाल कैसे हैं, खूबसूरती कैसी है, you know, quote unquote. So women do start to internalize this कि okay, maybe my worth would be higher in society if I looked a certain way, or that I just feel more at peace with myself if I was, you know, at a lower weight. शायद I'd be happier as a person. So I think it's that हम लोग अपने आज को ना एक फ्यूचर मी के लिए कांस्टेंट एक रिजेक्ट करते रहते हैं, यू नो. इट्स जस्ट अ डिसमिसल ऑफ हु आई एम टुडे फॉर द पर्सन आई वांट टू बी, थिंक आई वांट टू बी टुमारो, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स रूट टू ऑल दीस थिंग्स लाइक सेल्फ एस्टीम इश्यूज, बिलीविंग दैट यू नो अ सर्टेन लुक इज गोइंग टू गिव मी मोर सैटिस्फैक्शन. So and like you said, मेरे साथ भी बिल्कुल यही है. Certain things that I feel I'm so much more better at it today in terms of beauty, but I know that certain things are not completely harmonized. Yeah, and I think
it's also very important to not be in denial about it and accept this fact as well. How do I truly feel about it? Because social media पे ये भी होता है that you have to project that I'm 100% comfortable in my skin, while आपकी internally dialogue थोड़ा different है. And I think that's where चलो इस पे करते हैं expand. अच्छा, क्योंकि हमारी सारी कॉन्वर्सेशन आज की सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा बहुत हम ना एक क्रिटिकल लेंस के साथ भी देखें, क्योंकि हम दोनों इसी स्पेस में हैं. तुम बहुत अरसे से हो, मैं रिलेटिवली न्यू हूँ. मैं आई थिंक एक फॉलोअर पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अरसे तक आई वॉज अ फॉलोअर बिफोर आई बिकेम अ ब्लॉगर. यू हैव बीन ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. सो मुझे लगता है, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद दिस और नॉट, तुम्हें नहीं लगता कि एक बहुत मिक्स्ड मैसेजेस भी हैं सोशल मीडिया पे? मतलब at the heart of everything is marketing. Social media पे influencers influence करते हैं about products, about services, about experiences. मैंने खुद marketing में बहुत अरसे काम किया है, और marketing is all about meeting the customers' needs, right? लेकिन वो needs का भी एक concept evolve हो गया है कि अब अगर if you're running out of ideas, are you just creating more needs in the market? और जहाँ पे इतनी सारी acceptance की बात आ रही है कि आप जिस तरह से हो उस तरह से अपने आप को accept करो, self love, लेकिन उसके साथ साथ 10 ways to look better or look prettier or look put together और हाइड योर प्रॉब्लम एरियाज. मतलब इस चीज़ पे इतनी ट्रैक्शन मिलती है ऐसी वीडियोस को, जहाँ भी आप थोड़ा सा ये बता दें कि यू नो हाउ. एक थी यूट्यूब पे एक वीडियो, एंड आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, एंड जस्ट यू नो पॉप्स अप, इट सेड हाउ टू लुक मोर रिच, एंड उसके कोई पता नहीं कितने व्यूज थे. और मैंने कहा देखो, दिस इज अ नीड दैट यू आर क्रिएटिंग, दैट यू डोंट हैव टू बी रिच, यू कैन हैव 10 ways to look rich. So what do you think about that? Yeah, बिल्कुल. I think the beauty market and several other markets also, but abhi beauty ki baat ho rahi hai, do profit off of you not feeling 100% secure with yourself. You're not going to buy 12 products to fix your quote unquote flaws if you feel good about yourself, right? People make money if you're not comfortable with who you are. And you know, the interesting thing is that वैसे हमें ये बोला जाता है that you shouldn't care about it, and in parallel there's an equally strong narrative that says that, you know, how you're lacking or how you can be more desirable. There is constant pressure and guilting from both ends. You shouldn't be bothered about being beautiful, and also here are 10 products to make you feel beautiful. And I think that's also what divides women. और पता है body positivity जब आई थी, तो I think it was very helpful as a concept for people to see that, you know, these are things that I love about myself. But I think ये भी मैंने feel किया है that you don't have to even love something about yourself every single day. ज़रूरी नहीं है. And again, I think कि different narratives, body के जो narratives हैं, they work differently for people. Some people really thrive on getting that kind of an affirmation. Some people want a more neutral perspective कि, you know, okay, so I think body positive narratives are also great. But I think they still focus on the body, you know, उनका है perspective on the body also. And I think what can happen, जो कि अभी मैंने बोला था, कि we sometimes end up living in a form of denial where I say that okay, I'm a body positive person, even on days when I'm not feeling so positive about my body, and that creates an unseen cost on your system. And आप बोल वो चीज़ रहे हो, especially if you're on social media and you have a platform where you're sharing something with someone else, like you have an audience, so sometimes I think people might not be even telling the truth. Right. Okay, you know, oh, I'm so secure and whatever, but पीछे से there's a different dialogue happening, and that's what creates a cost on your system आपके अपने लिए. तो फिर क्या करें? मतलब मैं सोच रही हूँ कि तुमने मुझे से ये कहा है कि नेगेटिविटी भी नहीं बट पॉजिटिविटी भी नहीं, बट लाइक मेरे ज़हन में कुछ आ नहीं रहा. लाइक फिर हम किस तरह अपनी बॉडीज को किस तरह हार्मोनाइज का तुमने वर्ड यूज किया था, हाउ डू वी डू दैट? यार एक कॉन्सेप्ट है जो कि आई थिंक आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग अ बिट ऑफ बोथ, which is body neutrality. कि basically your perception of your body or your beauty does not define your worth or doesn't dominate your life. ठीक है ना? It's okay. Some days you can feel really good about yourself. Some days you're like, okay, I'm not looking so great. होता है ना कभी यार, आप उठते हो, आप कहते हो यार आज बात नहीं बन रही, whatever. But it doesn't. You create a disconnect between that defining your worth. I will look at myself and say, हाँ यार आज not looking so great, but it doesn't get deeper than that. It doesn't go to my defining your day. Exactly. ये होता है ना, good hair day, bad hair day. बिल्कुल. And I think with body neutrality, you just kind of focus on, you know, respecting the function of your body, what it can do for you, and not existing on spectrums of like love or hate around it. And but जैसे मैंने बोला ना, for some people body positivity, because it depends again on your personality type. For some people body positivity might be the right approach, for some neutrality, and for some a mix of both. And I think
try to practice for myself a bit of both. In fact, पता है मैं जैसे in terms of neutrality, I don't make my looks the center of my conversation also, even on social media. Like अगर मुझे कभी acne वगैरह होगी ना, I know some people will come online and they'll say हाँ stories शुरू करेंगे कहेंगे यार ignore my pimple, and I know why they're doing that. It's because they don't want people to comment on it, you know, because लोग फॉर्म बोलेंगे आपको पिंपल क्यों हुआ है, you know, so they're protecting themselves. But I also try consciously कि मैं वो भी उसको भी forefront पे ना लाऊं कि मैं वो it's just a part of being human. Your skin will act out sometimes. You will have something going on with your looks on one day or the other, and it's just about the fact that okay, that's just being human, and I'm not going to put it at the center of my conversation. हाँ, if I'm feeling a certain way about it, किसी मैं बोलूँ यार आज अजीब से कुछ feel आ रही है or whatever, you know, okay, that's different. But to say it as if वो thing कि because the looks are what are leading, you know, the conversation between you and the viewer, that's different. अच्छा, एक चीज़ I will say though at this point is कि what we're talking about is self work. We do have to acknowledge कि आप अपना सेल्फ वर्क तो करें, बट वी डू एग्जिस्ट इन एन इकोसिस्टम जहाँ पे बॉडी बायस, लुक्स बायस एग्जिस्ट. women do get kind of discriminated based on, like we said, skin tone. रिश्तों के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं लोगों को, जॉब अपॉर्चुनिटीज में किसी डिफरेंट किस्म का हो रहा होगा. फॉर एग्जांपल अगर क्लोथिंग कंपनी है, दे वांट टू हैव देयर कैंपेन्स, मे बी दे आर नॉट गोना चूज अ सर्टेन बॉडी साइज ऑफ अ वुमेन. सो अपॉर्चुनिटीज एंड things get marginalized for people who don't fit the standard of beauty. तो ecosystem में problem है and that bias exists, and I think that is also a very good conversation. हम लोग अभी सेल्फ वर्क की बात करें, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो कि अपना काम तो आप कर सकते हो, बट द इकोसिस्टम ऑल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क. वी हैव टू डू थिंग्स फॉर पीपल टू क्रिएट मोर स्पेस सो दैट, यू नो, दिस सीन, दैट बायस गेट्स डाइल्यूटेड ओवर टाइम. Of course. So it's not that someone who has a pimple just stop commenting on the pimple, but it also the other people stop, you know, they need to also stop कि भाई आपका तो पिंपल निकल रहा है. So there's so much else going on as well, right? ये एक बहुत डेली बेसिस पे हमने बात की है. हाँ, so it has micro as well as macro applications. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं जब इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आई. मुझे लगा कि जब हम अपनी फोटोज लेते हैं, ज़्यादातर हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, या मिरर में, या हम अपनी तस्वीरें सेल्फीज वगैरह ले रहे होते हैं, या कुछ, या सेल्फी ना भी हो, किसी और की भी पिक्चर, हम अपनी शक्ल या तो एक किसी गैजेट में देख रहे हैं या शीशे में देख रहे हैं. लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जितना हम अपने आप को देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं, राइट? सो कभी होता है कि तुम अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करो अपना इमेज अपने दिमाग में, तो तुम्हारे समटाइम्स होता है, मेरे साथ तो ये होता है कि यू नो, जब मैं अभी मैं कर रही हूँ एक्टिवली राइट नाउ, एंड यू नो समटाइम्स आई फील लाइक इट्स सैड दैट वी थिंक ऑफ पोज और रिंकल्स और डबल चिन और द एक्स्ट्रा पाउंड्स, लेकिन हमें नहीं लगता कि आफ्टर अ वाइल people stop paying attention to that. मतलब they are not looking at you and say शहज़ीन की ये good side है या ये bad side है या good hair day या bad hair day है. Like if I sit with you, right, I will focus on your physical aspect for maybe 2-3 minutes कि हाँ whatever, and then I will actually start focusing on how you're making me feel, what kind of a conversation we are having, what kind of a space have you created for me. When I walk away from here, how do I feel? Like I am paying attention to that, but हमें लगता है कि जो हम मिरर में देख रहे हैं और जो सेल्फी में देख रहे हैं, बस लोग भी उसी को देख रहे हैं. वैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बहुत क्रिटिकली आपको फिजिकली देखते भी हैं, बट अगेन जो तुम बात कह रही हो, एक तो तुम बात कर रही हो ऑल द हेल्दियर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, लाइक योर गुड फ्रेंड्स, हाउ दे परसीव यू, दे सी यू वेरी डिफरेंटली. इनफैक्ट मैंने एक चीज़ नोट की थी कि अगर आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, अगर आप टिपिकली एक कन्वेंशनल ब्यूटी पे सबको मेजर करो, तो यू विल बी से यू वोंट फाइंड कि आपके सारे बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो कोई मिस वर्ल्ड्स और मिस यूनिवर्सेस टाइप है, राइट? बट व्हेन यू develop that feeling of love for someone, और जब वो तैयार होके आते हैं, आपको अपना ही दोस्त कितना प्यारा नहीं लगता. You say you're looking absolutely beautiful today, यार तुम कितनी अच्छे लग रहे हो आज, कितनी अच्छी लग रहे हो. You're not just saying that. हाँ, you feel it, right? Because you see beauty in a different way, but you're so right कि your friend might still be seeing beauty from that whatever version they've created. और जो मैं वैसे critically की बात करी थी, जो लोग करते हैं, वो भी eventually कितनी देर तक यही बात चलती रहेगी. बिल्कुल सही कह रही हो. And I think this tells you a very key aspect of our version of beauty is that our ideals of beauty actually belong to other people. हमारे जो concept of perfect features है, जो standards हैं, they belong to others. हम उनके लेंस से अपना idea of beauty बनाते हैं. You know, ये वाली आँख खूबसूरत है, ये वाला lip shape खूबसूरत है. It's all belonging to others. अच्छा, इससे मुझे ना अपनी एक बात याद आ रही है. आई थिंक व्हेन आई वाज व्हाट मे बी 12-13, जब आप ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे होते हो अपने लुक्स के, हमारा टीवी लाउंज छोटा सा होता था और मैं वहाँ सोफे पे बैठी होती थी और सामने टीवी होता था और उसके साथ ना एक ऐसे एक कंसोल थी, उस पर शीशा लगा हुआ था. सो समटाइम्स आई वुड सिट ऑन द काउच, टीवी भी देख रही थी और मैं शीशे को भी देखती जाती थी ना. जब बड़े हो रहे होते हो तो आपका रिलेशनशिप विद मिरर इज ऑल्सो काइंड ऑफ इवॉल्विंग.
So my mother would sometimes pass by and she would look at me like मैं check out कर रही हूँ अपने आप को, मुझे मना करती थी। और उससे मुझे इतना गुस्सा आता था, ये सारा शीशे में क्यों देख रही होती हो, और टीवी देखो ना, मतलब किताब पढ़ो। और ऑटोमेटिकली शीशे की तरफ नजर चली जाती थी कि अच्छा मैं कैसी लग रही हूँ या क्या। उस वक्त तो गुस्सा आता था। आज मुझे समझ आती है उसकी विजडम कि वो क्यों मना करती थी कि इतना अपने आप को शीशे में देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो देखो ना, वही हम बात कर रहे थे कि हर चीज़ का जो एक रिपरकशंस होते हैं। आज तुम देख लो जो सेल्फी कल्चर है, सारा वक्त, आरंट वी ऑब्सेस्ड विद दिस होल सेल्फी थिंग। किसी जगह चले जाओ, पार्क में, बीचेस में, रेस्टोरेंट्स में, कहीं भी, people are just, you know, this thing has become so common, and are we just now looking at ourselves just through that lens, you know, and becoming obsessed with that image that we see all the time? पता है यार, I'm so glad you mentioned it because I kind of have a spiritual kind of a link to this idea that you're talking about. मुझे ऐसा लगता है कि I think we should develop a relationship with our reflection also, you know. और actually मैंने इसके ऊपर कुछ 2-3 साल पहले ना ऐसे एक होता है ना, चीज़ें आपको करनी है लाइफ में, आप ऐसी कुछ सोचते हो, कहते हो कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू चेक माई सेल्फ इन एवरी रिफ्लेक्टिव सर्फेस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आप ऐसे ही निकले हुए हो, तो वो नहीं होता किसी शॉप की मिरर नहीं खिड़की होगी, उसमें भी आपको नजर आ रहा है, तो आप हर एक में अपने आप को देख रहे हो, गाड़ी के शीशे के पास से गुजर रहे हो तो यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ, हर मतलब एनी रिफ्लेक्टिव सर्फेस, एंड आई वाज लाइक मैन आई डोंट वांट टू लुक एट माई सेल्फ थ्रू एनी अपॉर्चुनिटी दैट आई गेट। सो अभी भी मैं जिस तरह घर में तैयार होती हूँ, आई गेट रेडी इन द मॉर्निंग, एंड देन कभी हो गया ऐसे कि गुजरते हुए ये वो, but I won't be looking at myself constantly also throughout the day. Okay, I check myself. I like getting ready in the morning. I like looking a certain way. So I am interested in my looks in terms of, you know, the overall experience that I have of myself, but don't want to check myself all the time. मुझे किसी दिन इनफैक्ट किसी ने बोला था कि तुम्हारी डेस्क पे मिरर रखा हुआ है, तो कि मेरे पे तो होता, मैं आई वुड हैव केप्ट लुकिंग एट माई सेल्फ ऑल द टाइम, एंड तो मुझे काफ़ी वो फनी भी बात लगी, एंड देन इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि यू नो हम सबकी रिफ्लेक्शन से एक अलग रिलेशनशिप होती है। समटाइम्स इट कैन बी वन ऑफ वैनिटी, समटाइम्स इट कैन बी ऑफ यू नो कि आपने देखना ही नहीं है बिकॉज ऑफ यू फील दैट ओ इट्स लिंक्ड टू प्राइड, राइट। कोई हो सकता है समवन डजंट वांट टू लुक एट द रिफ्लेक्शन एट ऑल बिकॉज दे डोंट लाइक व्हाट दे सी, एंड आई थिंक इसमें भी आई वुड से I wanted to build a certain kind of neutrality. Okay, I do want to look at myself because this is who I am, but also not make it everything about my day, right? And again, I think it might feel like a very random thing, but I think creating this relationship with your sense of self or vanity, you do it so that you can extend it to other parts of your life also, including social media. जैसे अगर तुम देखो कि कभी ये नहीं, मुझे I've seen some of my friends also do it, and I also caught myself doing it, and now I try कि नहीं मैं करूँ। इसकी जब किसी की तस्वीर देखते हो तो आप वो करते हो कि आप जूम करके देखोगे कि अच्छा इसकी अंडर आई लाइन्स उतनी हैं और इसकी पिगमेंटेशन है कि नहीं है, एंड इट्स नॉट दैट पीपल आर काइंड ऑफ फीलिंग रियली बैड अबाउट माई सेल्फ, समटाइम्स यू जस्ट डोंट नो एंड यू आर डूइंग इट वेरी सबकॉन्शियसली बिकॉज यू आर कंपेयरिंग, मतलब दूसरों की देख, हाँ दूसरे की, क्या आप डोंट यू इंस्टा पे नहीं ऐसे जूम करके लोग देखते हैं अक्सर कि do they have the same issues as I do, or do they fit into that perfect idea of beauty that they seem to belong to, कि अच्छा दूर से तो अच्छी लग रही है बट जूम करके है कि नहीं है, और ये भी लोगों को होता है कि इस पे प्यारी लगती है बट असल में है कि नहीं है। I see people sometimes talking online कि you know isn't that celebrity के बारे में, isn't that beautiful in real, I've seen her, you know, so like I think it's these things that help you understand that you subconsciously end up doing these mental calculations of your beauty ideals, and it's, while it may seem like a random thing to create a relationship with your reflection, I think you can just extend it to other parts of your life, including social media. अच्छा, मैं तुम्हें हैंड ओवर करने से पहले एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। Again, this might sound a little like crazy, but I think the way we use certain tools in our life can help us shift our ideals of beauty. Because I do this sometimes as an exercise, is कि you know just look at yourself with a very deep level of consciousness at who you are. जैसे I think अभी हम लोगों को mirrors हम इस तरह use करते हैं कि you know look at yourself from the perspective of कि what's off right now, कि अच्छा आप मेकअप ब्लेंडेड है कि नहीं है, सही लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कोई ऐसी चीज़ है फिक्स करनी है, बट हाउ मेनी ऑफ अस आर एक्चुअली टॉट कि यार ये मिरर है, एंड taught to look at us. And अगर आप historically देखो तो mirrors represent light, wisdom, awareness, you know, उनकी अगर आप history में जाओ different cultures उनको इस तरीके से देखते थे, but हमने उनको इस तरह बना दिया about vanity and insecurity. It can be a very humbling experience to kind of look at yourself, and I think I just kind of encourage everyone, if you haven't tried it, to try this, to just look at yourself in the mirror and try to
really think about taking a peek into your soul, because I think you can actually do it. It's a very humbling experience, and I would even say I know some people actually, कुछ लोग struggle करते हैं, they don't actually like what they see in the mirror. There are some people like that. Even then I feel it's a humbling experience and it's a beginning to something, which I think is like जैसे it's like taking a journey from how society sees you, because first when you start doing this you'll see all the things about you that probably you don't, you know, that don't fit into ideals of our society, and then it kind of eventually, as you start to look at who you are, your soul, who is Shazeen, who is Fiza, if you just let your guard down, you let your judgments down, you eventually really start to see the person that there is, right? And you can actually move from, like I said, the ideals of beauty to what your own unique beauty is about. It's very interesting because generally आपको जब सिखाया जाता है कि जब बड़े होते हो बिजनेस कम्युनिकेशन ये वो जब आप लोगों से मिलते हो हैव अ वेरी गुड आई कांटेक्ट। मैं कहती हूँ हम अपने आप से कब करते हैं आई कांटेक्ट, तो ये मिरर्स के थ्रू ही होता है। माय गॉड यस, दैट इज सो ट्रू। वी नेवर मेक आई कांटेक्ट विद आवरसेल्व्स बिकॉज़ व्हेन वी लुक एट अ मिरर वी आर लुकिंग एट अ वेरी सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ आवरसेल्व्स। एंड पता है ये थोड़ा सा आई नो थोड़ा लोग क्रिंज करेंगे इसके ऊपर, बट आई फील लाइक कुछ चीज़ें जो है ना इनमें काफ़ी विजडम होती है। जैसे कहते हैं ना आईज आर विंडो टू योर सोल, दे आर। अरे हाँ, आई कांटेक्ट इसीलिए जब तो पता है मैंने एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज की थी। अगेन आई कीप ब्रिंगिंग माय कोचिंग एक्सपीरियंस बिकॉज मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं। जब हमारा पहला दिन था ना, बस पहला दिन हम सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी, हमारी इंट्रोडक्शंस नहीं कराई उन्होंने, नाम नहीं शेयर करवाए। उन्होंने क्या किया, अभी हम किसी को नहीं जानते, अभी हम आए हैं। वो शुरू में मुझे नर्व्स होते हैं, मुझे तो वैसे ही बेहोश हो जाती हूँ इतने बड़े कमरे में नए लोग। उन्होंने क्या किया, हम लोग पता नहीं 16 लोग थे शायद, उन्होंने 8 लोगों की चेयर्स यहाँ लगाई और 8 लोगों की चेयर्स लगाई, हमें बिठा दिया एक दूसरे के, और उन्होंने कहा कि एवरीवन विल जस्ट मेक आई कांटेक्ट। ओह माय गॉड, ठीक है, एंड देन विल शिफ्ट, एक शिफ्ट। तो आई मेड आई कांटेक्ट विद लाइक 8 पीपल in like 16 minutes, right? Because 2 minutes each. Yeah. I cannot tell you what an experience that was. I don't know this person's name. I don't know their history, their background, their lifestyle, nothing. But you know, it moved some people to tears. I can fully imagine. And it was just that, you know, for example, there was this girl, and they said don't break the eye contact because you know her eyes kept watering up. I don't know what she saw in me, and my eyes kept watering up, and I know this is going into maybe a little bit of a crazy वो जा रहा है वहाँ पे crazy area में जा रही है example, but because I have experienced it, I can tell you that even before you know someone's name or anything about them, just looking into their eyes, and जैसे हम कहते हैं आँखों में आँखें डाल के देखो, just a romantic aspect, but with anyone. So I feel like it's so important to do it with our own selves as well. And when you start looking at yourself and really make that eye contact, you will see things about you that you probably have never seen before. बिल्कुल बिल्कुल. You just have to let your guard down, No judgment down, and you genuinely, मुझे ऐसा लगता है sometimes you just it's like a piercing look into your soul. Just try it. हमें बताना अगर try किया हुआ है, and please tell us अगर try करो तो. अब पता है judgment अगर आ भी जाए ना, जैसे आ जाती है, वो आई थिंक कुछ सेकंड्स के बाद चली जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कंपैशनेट टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। एब्सोल्युटली। अभी हम कुकी हो गए थोड़े। हाँ चलो जरा नॉर्मल होते हैं। बैक। अच्छा, एक और बात तुम करी थी ना अभी इकोसिस्टम की, तो मैं सोची थी कि हम जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम अपने आप को उसमें से निकाल के देखते हैं कि इकोसिस्टम अच्छा होना चाहिए, राइट? हम भी तो उसी इकोसिस्टम का पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी को मिलें, आई थिंक ये बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है अपने आप को भी, कि जब हम किसी को मिलें, जैसे मैं तुम्हें पहली बार मिलूँ तो मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी फिजिकल चीज़ें ना देखूँ कि यार बड़ी प्यारी है, बाल बड़े अच्छे हैं, ये है वो है, वो भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन सिर्फ वो ही ना रह जाए। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशंस आर द लास्ट इंप्रेशंस, व्हाटएवर। नहीं, वो फर्स्ट इंप्रेशन किस चीज़ का ले रहे हैं आप, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि एक बार मैंने शायद पोस्ट लगाई थी अपने ब्लॉग पे कि जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करो तो कोशिश करें कि आप 2 चीज़ों पे कॉम्प्लीमेंट ना करें उनको, क्योंकि दैट विल फोर्स यू टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। डोंट कॉम्प्लीमेंट ऑन समथिंग दैट दे आर बोर्न विद। सो फॉर एग्जांपल ब्यूटी, या कोई बहुत ही इनर बॉर्न ब्यूटी है किसी की, या कोई कद है या कोई बाल है। और डोंट कॉम्प्लीमेंट समवन ऑन समथिंग दैट दे कैन बाय विद मनी। अब ये 2 चीज़ें निकाल दो, अब तुम बताओ किस चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन ऑटोमेटिकली यू विल बी फोर्स्ड टू सी थिंग्स इन दैट पर्सन that you have not paid attention to, or maybe they have also not paid attention to. How many times have people told me कि तुम्हारे कपड़े बड़े अच्छे हैं, ज्वेलरी बड़ी अच्छी है, मेकअप बड़ा अच्छा किया हुआ है, and how many times have people told me, Fiza, you made me feel so good today about myself. ओह होए बिल्कुल सही बात। So even I think that ecosystem में हम भी हैं, और I think हम लोग में थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है कि दुनिया सिस्टम ठीक हो, हम तो ठीक हैं, बट सिस्टम ठीक हो।
मतलब हमें भी ठीक होने की जरूरत है। लेकिन ये भी बात है कि कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन दीज थिंग्स में भी कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल, एंड इट कनेक्ट्स टू व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर कि अगर आप अच्छे लग रहे हो और आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो फील गुड अबाउट दैट कॉम्प्लीमेंट, बट नॉट फील कि अच्छा जी अब बस मिशन अचीव्ड, और दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अपने लिए एज एन एक्सरसाइज आल्सो कि आप इंसान को हर चीज के ऊपर दो। बिल्कुल, और इससे ये भी चीज़ कनेक्ट होती है कि वो लोग कहते हैं ना कि पीपल हु लुक आफ्टर दिस स्किन और हेयर और बॉडीज, वो थोड़े से वो वैनिटी है, वो भी चीज़ निकल जाती है उसमें से कि इसमें भी कोई बुराई नहीं है। सो व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल लुकिंग आफ्टर योर स्किन और योर हेयर और व्हाटएवर, पता है मैंने तो अब क्या सोचना शुरू कर दिया कि जब मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखती हूँ ना, लाइक आई डोंट फील एनी गिल्ट और शेम और एनीथिंग। मुझे लगता है कि यार अल्लाह मियां ने इतना अच्छा वेसल दिया है मुझे, इट कंटेन्स माई सोल, it makes it possible for me to live through the day, छोटी छोटी चीज़ें. So yes, I will take care of my nails, and yes, I will take care of my body, but not from a point of view that the more I do it, the more I'll get compliments from people, or it will make me look good on the camera. But I feel it's another form of gratitude. To look after yourself. Yeah, and I think वही वाली बात कि to not exist on extremes, because beauty के लिए भी, for example, मैं जब सोचती हूँ कि कभी ये भी होता है ना, why beauty becomes sometimes problematic is because of external pressures, एक ही चीज़ के पीछे के हम रिसर्च करने यही बैठ जाते हैं कि बेस्ट सीरम्स कौन से हैं, बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सारा दिन आपकी रिसर्च, फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटी रिलेटेड है तो उस पे होगी, बट देन ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू थिंग्स लाइक ब्यूटी ऑफ योर थॉट्स, अपनी हेल्थ पे फोकस करना, सो लाइक योर ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। सो बेसिकली जस्ट बिलीविंग कि आपके जो दिन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सो विच टेल्स यू कि ओके, अगर फिजिकल ब्यूटी की लाइक बिल्कुल शक्ल की अगर देखो के लिए इतना टाइम है तो देयर इज नो गिल्ट अबाउट इट, लाइक यू सेड, एंड ऑल्सो बट देन फोकस, टेक आउट टाइम फॉर बिल्डिंग योर मेंटल ब्यूटी, ऑल्सो ब्यूटी ऑफ योर थॉट्स। तो या आई नो व्हाट यू आर सेइंग। अच्छा चलो अब जरा और फोकस्ड आते हैं, आई थिंक इंस्टाग्राम फिल्टर्स पे आते हैं। You sure you want to go there? नहीं, आई थिंक हम बड़े ओपन वो बात करना चाहते हैं, बिकॉज वी नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल यूज इंस्टाग्राम फिल्टर्स, और मैं फेस ऑल्टरिंग फिल्टर्स की बात कर रही हूँ, द वंस दैट काइंड ऑफ चेंज योर स्किन टोन और चेंज योर फेशियल फीचर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज। वो जो एक एस्थेटिक फिल्टर्स भी होते हैं ना, जैसे टू मेक द वाइब ऑफ योर रूम अ लिटिल वार्म, और लाइक अगर आपने कोई कलर टोन एक स्पेसिफिक देना है टू कम्युनिकेट अ फीलिंग, लाइक फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स अरसे से करते आए हैं। आई थिंक दैट इज लाइक अ मोर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट फेस ऑल्टरिंग फिल्टर्स, एंड लाइक आई सेड बहुत लोग यूज करते हैं, हमें पता है, एंड वी डोंट वांट टू मेक दिस अबाउट द फैक्ट कि हाय आप क्यों यूज करते हैं। आई थिंक वही वाली बात, टाइंग बैक टू द ओरिजिनल thing that we discussed when we started, that we just want to create space to have this discussion and evaluate how does this affect our own concept of beauty and other people's perception of beauty, and also maybe it has other repercussions as well. So just make ourselves aware and use them with that awareness, or choose to not use them with that awareness again. So ये हम जरा आते हैं इसके ऊपर। यार ये तुम बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आई हो कि it's very close to my heart. I think about it a lot. हाँ. और मे भी आज से 3-4 साल पहले मुझे ना फर्क पड़ता, बट नाउ माई डॉटर इज ग्रोइंग अप, राइट, एंड आई नो दैट आजकल वो नहीं, आज नहीं है इंस्टाग्राम पे, कल तो होगी। तो ये जो फेस ऑल्टरिंग फिल्टर्स है ना, इनके बारे में there's a lot I want to say. तुम्हें याद है हमने जो एक दिन यूज किए थे? Oh my God, एक दिन हम वैसे ही थोड़े सिली से मूड में थे, तो हमने एक देखा फिल्टर which actually was very like it was very drastically altering someone's features. हमने कहा ट्राई तो करके देखते हैं, and it changed everything for me, and I think I didn't like myself with that at all. मतलब I got a really nice jawline, but yeah, it was disturbing to see, क्योंकि it changed a lot on. It wasn't you. It wasn't me. It wasn't me, and I think हम लोग इसी context में बात कर रहे थे, because I think when we started कि हम इस पे बात करें या नहीं, फिर हमने ज़्यादा एक्टिवली देखना शुरू किया फिल्टर्स को। हाँ, that's true. I became more aware of them. हाँ, उससे पहले हम देख रहे थे, पता चल जाता है फिल्टर लगा हुआ है, बट वी वर लाइक अच्छा क्योंकि हमने इस बारे में बात करनी है, लेट्स बी मोर, तो हमने एक चूज किया, एंड फिर शहजीन ने एक पिक्चर ली अपनी और मैंने, और हमने फिर एक्सचेंज किया, एंड वी वर जस्ट लाइक ओके दैट्स नॉट यू। And before we expand further into it, I think you guys need to pitch in to this conversation, because this is my perspective and this is Shahzeen's perspective, but I know that there are a lot of perspectives on this. So आ जाओ। तो फिर तुम मुझे बताओ तुम्हारी इनिशियल थॉट्स क्या हैं फिल्टर्स के बारे में। अच्छा, पहली चीज आई थिंक इज कि माय परसेप्शन ऑफ इट इज ऑफ द यूजेज इज दैट आई थिंक लोग कहते हैं कि वी जस्ट यूजिंग इट एज अ फन थिंग, एंड बट आई फील दैट इट्स नॉट रियली सच अ फन थिंग, बिकॉज आई थिंक इफ यू लुक एट द वे पीपल टॉक अबाउट यूजिंग देम, it tells you a lot about how it affects their perception of beauty or the perception of beauty for the person watching them.
फॉर एग्जाम्पल पीपल विल समटाइम्स से कि अगर कोई तारीफ कर रहा है कि यार आप बहुत प्यारी हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो समवन से यू नो नहीं नहीं यार लेट मी शो यू व्हाट आई रियली लुक लाइक, एंड देन दे विल शो बैक एंड फोर्थ करके कि देखो दिस इज व्हाट आई लुक लाइक विदाउट द फिल्टर, व्हिच आई थिंक सबकॉन्शियसली implies that I look great with the filter, but let me show you what I really look like. Or they'll say that I don't look like this, which clearly implies that I look better with the filter. Yes. You think I'm pretty, but I don't look like this. So I think while we're trying to be like this quote unquote real, aren't we kind of saying that I'm not, the filter is pretty, it's not me. It's not me. So there's a bit of rejection of yourself for the filtered look. Yeah. तुम्हें वो एग्जाम्पल याद है जिस दिन हम एक ब्लॉगर की बात कर रहे थे जिसने बोला था, and I thought it was also an honest thing. She said, you know, I use a filter so much कि मैंने अपने आप को उस दिन गुजरते हुए शीशे में देखा तो मैं एक सेकंड के लिए रुकी, because I see myself in my mirror while I'm doing stories, stuff like that, and she said I suddenly saw myself without the filter because the filter doesn't exist in the mirror, and she's like कि मैं एक सेकंड के लिए ऐसे हो गई कि oh I look like this, and I was like that also tells you that it does affect your perception of your own beauty, right? Because you just start to believe that the filter is me. So I think while it gets called as just a fun thing, I think it gradually builds a resistance to your own face. और I think हम लोग सब एक believe करने से लग गए हैं कि the filter is beautiful but I'm not. कभी ये देखा है कि लोग एक आप कैमरा में साथ उनको लो तो, या लोगों स्टोरीज में भी कभी नजर आता है कि वो बोलेगा अरे लुक सो गुड डिड यू पुट अ फिल्टर, सो व्हाई यू कांट लुक गुड विदाउट द फिल्टर. सो यू नो that idea, I think even अगर कोई बहुत secure भी हो, which I think some people are, and maybe using the filter is not really messing with them, but I think it does alter, if not their own perception of beauty, but just creates a certain understanding of imperfection. मतलब कि आपको लगने लगता है my face is imperfect and the filter is perfect. So आपको ये नहीं शायद आपको filter के बगैर भी अपनी शक्ल प्यारी लगे, but you still believe that this is imperfect. बिल्कुल. अच्छा तुम्हें याद है जब हम ये फिल्टर्स का जब हमने ज़्यादा एक्टिवली देखना शुरू किया तो पहले मैं ना सिर्फ देखती थी कि क्या फिल्टर लगा हुआ है, पता चल जाता है फिल्टर, फिर मैंने नाम देखने शुरू किया. अब वहाँ भी एक सटल किस्म की कंडीशनिंग हो रही है. एक का फिल्टर का नाम है प्रिटी. Oh my God, yes, yes. I didn't think of it like that. अब आपने वो फिल्टर लगाया, अब आप प्रिटी हुए हैं. You know, उससे पहले आप नहीं थे. नॉन प्रिटी, प्रिटी, right? Because you're constantly daily telling yourself, I'll use a pretty filter today. I'll use a pretty filter, right? Ironically, there's one called as no filter. एक है, इसमें तो एक हाँ. और एक है natural. हाँ. एक है good skin, which actually really like. That kind of, I don't know, it makes me uncomfortable because you know, good skin. Uncomfortable. मेरी skin नहीं अच्छी, let me put the good skin filter, right? And I don't know, I feel like यहाँ पे भी it's not just putting on the act of putting on a filter, but it's also that name हमें समझ नहीं आती, but ये रोजाना बेसिस पे हम अपने आप को ही एक कोई चीज जो है ना solidify कर रहे हैं अपने दिमाग में कि let me put a pretty filter, let me put a natural filter. अच्छा जब हम छोटे थे और हम मैगजीन्स में किसी मॉडल को देखते थे और हमें वो बड़ी ब्यूटीफुल लगती थी, पर हमें पता होता था कि ये फोटोशॉप हुई है, ठीक है, और हमें इसके साथ एक मसला भी होता था कि यार इतना फोटोशॉप क्यों कर देते हैं. फोटोशॉप के अगेंस्ट बहुत लोग हुए कि इसी तरह इन लोगों ने ख़राब किया है हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिजिकल आइडेंटिटी, और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स किए हैं, और ये तो फोटोशॉप है, तो एयर ब्रश है ये वो. तो मुझे कभी कभार ना मैं आई क्वेश्चन कि फिल्टर्स, हाउ आर फिल्टर्स एनी डिफरेंट, यू नो, कि अब आपके पास, अब वो तो एक स्किल थी जो कि फोटो एडिटर्स के पास है, अब ये ऐसी चीज़ है जब आपके पास एक स्वाइप पे अवेलेबल है, ठीक है, और आप लगाए जा रहे हो फिल्टर्स, और आप एयर ब्रश हो और सब कुछ हो, और आपको लगता है कि शायद वो हार्मलेस हो, लेकिन अब जो लोग देख रहे हैं, अच्छा लोग भी तो एक बंदे को नहीं देख रहे ना, लोग भी तो 10 बंदों को देख रहे हैं, और वो कर रहे हैं, तो क्या ये वही चीज़ एग्जैक्टली नहीं है कि पहले जो चीज़ हमें मैगजीन्स में मिलती थी और हमें पता था कि ये एयर ब्रश है, बट अब हर कोई लगा रहा है, एंड समहाउ इट्स एक्सेप्टेड, एंड आई फील लाइक you know, Insta is something that's available to like a million of people. पहले हम इतने मैगजीन्स कौन खरीदता था, राइट? हर घर में मैगजीन्स नहीं आते थे, बट अब इंस्टा हर एक के पास है, फिल्टर्स हर एक के पास हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक, I'll say something, you know, I think I'm not neutral on this topic, Shahzeen. मुझे लगता है कि, and I know maybe because I have a daughter, you know, and I know that I want, as much as I want her to grow with a very strong sense of self, I feel like these things will not help her. तो मैं जब उस पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ तो मेरे लिए it becomes very hard to stay neutral on this. मुझे लगता था कि ये स्नैपचैट पे शुरू हुए भाई वो बनी हेयर्स और डॉगी हेयर्स, और when did it transfer, like, and everyone was doing it, you know, in whatever good humor, but how did it evolve from that now to chiseled jaws and bigger lips and, you know, just higher cheekbones and even eyelashes and color of the eyes, and I don't know, but a part of me also thinks कि लोग declare तो करते हैं
लाइक छुप के तो नहीं लगाते फिल्टर्स, तो फिर यू नो समटाइम्स आई थिंक अबाउट दैट टू। नहीं, ये तुम सही कह रहे हो कि डिक्लेयर भी करते हैं, पता है, लेकिन इसमें एक और बात है. आई थिंक इवन इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर फॉलोअर्स एंड यू आर सेइंग आई एम यूजिंग अ फिल्टर एंड ऑफ कोर्स इट शोज आल्सो ऑन टॉप, राइट, एंड यू इवन शोइंग कि यार दिस इज व्हाट आई लुक विदाउट द फिल्टर. Even then, if 90% of what you're showing is a filter, so how does even telling the truth matter? Because your followers' brains can't process that. Ab 10 stories aap dikha rahe ho with a filter, and then one you're showing without a filter. Ke haan, okay, this is real, and then back to 10 stories. So I think reality doesn't exist when the truth is changing so rapidly, right? What is the truth anyways? You've almost created a new normal. So I think declaration or no declaration, but the reality is very distorted suddenly, and people know that it's a filter, yet they continue to believe that the person looks like that, and they continue to dislike what they look like, because they're still matching their current whatever real self with the filtered self, while also being aware it's a filter. So it's almost a distorted reality, right? It is. अच्छा, लेकिन एक बात सुनो, ये बताओ, if a person says I'm only using filters to express myself, ठीक है, how is it okay to kind of ask someone to minimize themselves for someone else who may have something like a self-esteem issue, and that's something that they need to work on? तो फिर isn't this a tricky slope कि आप किसी को है issues पर दूसरा बंदा कह रहा है I'm just living my life and expressing myself, तो फिर क्या हम उस बंदे को पुलिस नहीं करे? You guys also kind of tell us what you think about it, because I wonder. अच्छा, आई थिंक ये वो वाला सवाल है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं है. मुझे लगता है इसमें मैं सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव या अपना ही जवाब दे सकती हूँ. और मुझे लगता है कि जब आप कंटेंट क्रिएटर्स जब वो कंटेंट बनाते हैं तो वो कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं, ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, राइट? तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन बोथ एंड्स, फॉलोअर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रिएटर्स की भी. मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ओनस मैं क्रिएटर्स की तरफ डालूंगी कि यार you have to create content, you know, which also needs to be received in a certain way. It's not just sending out content, you know, हम communication में भी बात करते हैं कि it's not just saying something, it's also being mindful of how it is being received, right? It's not just one way. So content का भी यही है कि थोड़ी responsibility का ख्याल रखना कि यार हम उस culture, जो हम culture की बात कर रहे हैं, हम उस तरफ तो नहीं contribute कर रहे जहाँ पे already हमें पता है self esteem issues हैं. और ये तुमने अपने DMs में भी देखा होगा, मेरे DMs में भी मुझे आती हैं ये बातें. मुझे ना फिल्टर्स के बारे में भी कुछ आए हैं मैसेजेस कि you know, why are they even available? And it's not coming from me. People are saying that why are they even available on this platform? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर चीज़ अगर अवेलेबल है तो उसको यूज़ करने की शायद इतनी हद तक ज़रूरत नहीं है. और हाँ, आई डोंट थिंक आई विल मिंस माई वर्ड्स हियर एंड आई विल से कि यू नो इट्स नॉट रियली लुकिंग आउट फॉर समवन विद लो सेल्फ एस्टीम. इट्स जस्ट अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू अ कल्चर व्हिच ऑलरेडी हैज़ द पोटेंशियल टू बी प्रॉब्लमैटिक. एंड आई थिंक थोड़ा सा अगर मैं इससे भी लिंक करूँ, जो हम पहले बात की थी हमने बिल्कुल शुरू में, कि सोशल मीडिया के जैसे कोई रूल्स नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है. लेकिन आई थिंक अगर आप बेसिक से बेसिक चीज़ भी देखो तो जैसे सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो तो यू कैन से ना माई कार कैन गो अप टू लाइक 200 किलोमीटर्स एन आवर, बट इफ योर रोड स्पीड लिमिट इज let's say 80, you can say I can go, but you have to abide by certain guidelines. बिल्कुल. Because as a civic duty and also for the health of and safety of other people that you exist in the community with, right? And so I think maybe in this as well, agar ye exist nahi karti and filters we are using like very openly without any considerations, maybe it's important to understand ke, do you want to create your own boundaries around their usage and be more mindful about what kind of filters do you want to pick up, or how start thinking about ke yaar वो 13 साल की लड़की, जैसे मैंने तुम्हें बोला, इट रियली व्हेन आई डिस्कवर्ड दिस गर्ल व्हेन शी मैसेज मी, एंड मुझे कर चुके हैं पहले बट मे बी आई एम एट अ डिफरेंट पॉइंट इन माई लाइफ, व्हेन आई हर्ड हर एज आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू बी मोर केयरफुल अबाउट not projecting a problematic version of beauty. And मैं बिल्कुल filters use नहीं करती, but I think I'm pretty sure I will never use any filters because I know that young mind is watching me and I want her to see my real face and I want her to see that I'm interested in my beauty. I like getting dressed up, I like taking care of my hair. I want her to care about her own unique beauty but not project an altered reality to her. बिल्कुल. Or him, because I think they're used by in fact all genders. अच्छा, मुझे ये बताओ, what do you say to someone who says कि मेकअप भी करना एक तरह से एक फिल्टर ही हुआ ना, तो मैंने मेकअप नहीं किया आज बट मैंने फिल्टर लगा लिया because you know it's the same thing. So I mean when I think about it I'm like हाँ, मतलब kind of makes sense. So अच्छा, ये एक्चुअली ना मैंने किसी की स्टोरी पे देखा था कि आई थिंक दैट पर्सन वाज नॉट प्रो फिल्टर्स बट शी डिड से कि आज मेरे पास टाइम नहीं था मेकअप करने का, तो मैंने देखा हुआ ये चीज़. और यार मुझे लगता है कि जैसे अगर
तुमने मेकअप नहीं किया हुआ और मैंने किया हुआ है, और तुम मुझे देखो और मैंने फॉर एग्जांपल लाइनर लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, और तुम कहोगे यार लाइनर बड़ा अच्छा लगा हुआ है, मैं कहूँ कि यार तुम भी लगाओ, तुम्हारी आंखों पे सूट करेगा या क्या, तुम वही चीज़ तुम्हारे पास भी अवेलेबल है, जितना टाइम मुझे 5 मिनट लगाए तुम्हें 10 मिनट लगाए, वट एवर, लाइक यू हैव द सेम टूल्स अवेलेबल टू यू। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे अगर मैं कहूँ कि यार आज मैंने मेकअप नहीं किया, मैं जल्दी से एक फिल्टर लगा लेती हूँ, इफ़ यू आर वॉचिंग मी दोज टूल्स आर नॉट अवेलेबल टू यू। और हम जितना मर्जी कहें ना कि हमने फिल्टर सिर्फ इसलिए लगाया है कि ये क्विक मेकअप हमें इसने दे दिया है, यू नो, बिकॉज आज हमारे पास टाइम नहीं था, तो द फिल्टर इज जस्ट एडेड अ बिट ऑफ लिपस्टिक और लाइनर। आई थिंक इट्स मच मोर देन दैट, एंड आई हैव ट्राइड दैट विद द मोस्ट नेचुरल लुकिंग फिल्टर्स, इट स्टिल alters your face, you know, so it does not just add a lipstick or a liner, it will sharpen your jaw a little bit, it will smoothen out your skin, so it's not just putting on a filter that's given you makeup, it's actually you've altered your face, and you may have gone for the most subtle one, but your face has changed, and I've tried that for myself. So I don't think that these two things are equal in any way. That's at least what I think. और तुम अगर हाँ, और स्पेशली आई थिंक ऑल्सो जब तुम मेकअप कर रही हो तो स्टिल अभी राइट नाउ आई कैन सी योर द पिगमेंटेशन ऑन योर फेस डिफरेंट, और स्किन टोन आपका डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट होता है, आंखों के नीचे डिफरेंट होता है, इधर उधर, तो मतलब आई कैन स्टिल सी your original वो, and again you can do heavier makeup and camouflage a lot of other things also, or shape your eye, because कुछ लोग ऐसे करते हैं ना मेकअप जिसमें फीचर्स बहुत, but I think on a daily basis जो लोग 5-5 मिनट के मेकअप हम लोग जैसे करते हैं उसमें आपकी altering face alteration नहीं होती, and also we don't even possess the skills. I think मेरे बहुत basic makeup skills हैं, I can't alter. बिल्कुल, एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर को मैं देख रही थी, उसने एक रील बनाई थी कि she was trying to copy a filter, और बड़ा नेचुरल सा फिल्टर था, बड़ा अच्छा सा था, कोई फ्रेश फेस या कुछ, उसने कहा कि यार ये आई हैव टू रिक्रिएट इट। तुम्हें पता है इसको कितना टाइम लगा है, कितनी उसने कॉन्टोरिंग की है, कितनी उसने बहुत स्किल लगा है फॉर अ मेकअप इन्फ्लुएंसर टू रिक्रिएट, इवन देन फिर उससे उस तरह से नहीं हुआ। सो इट्स नॉट just like with a swipe, you're not just adding makeup, it's not an equal comparison, it's not an equal comparison, because on most days as you said, what do we do, मिनिमल मेकअप ही करते हैं ना रोज, तो हम रोज तो बेसिक स्किल्स होते हैं। अब इससे फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू सी जिनका पूरा फुल फेस ऑफ मेकअप होता है, वो उसके ऊपर भी फिल्टर लगाते हैं, सो देन आई वांट व्हाट्स दैट अबाउट, ये भी होता है। अच्छा, एक और चीज भी तुमने नोटिस की है कि कभी कभार आपका फिल्टर लगा हुआ है और आपने पैन किया, और अगर बच्चे हैं उधर स्क्रीन पे, अब बच्चों के मुंह पे भी फिल्टर लग जाता है, यू नो, दैट्स अ बिट, वो बच्चों के भी ब्लश लग गए हैं, बच्चों की भी लैशेस लग गई हैं एकदम से, और स्किन स्मूदन हो गई, है। तुम इतनी सही बात बोल रहे हो, बिकॉज you know, I think that sometimes you forget that तुम और मैं जिस generation से हैं, we grew up in a time where we didn't have access to all of this, and then again not so easily, like you said, right? And I think we probably held on to a sense of, you know, what our own unique beauty is like. With age and experience as well, we learned certain things, and we kind of probably even remember what was real and what wasn't, right? But I think with children, when you're doing this, कि आप उनको जो एक फोन में जब भी वो अपने आप को देख रहे हैं, तो वो अगर एक फिल्टर के साथ smoothened looks, different skin tones के साथ देख रहे हैं, so we maybe just took out the space for them to develop that love and care for their own sense of beauty. So ये बात बड़ी मतलब solid है, मैंने नहीं सोची थी कि वो जो बच्चे भी उसके अंदर cover हो जाते हैं, ये जो भी आपके साथ बैठा है। अभी मैंने जैसे बोला द यूनिकनेस ऑफ योर ओन फेस, जैसे तुम्हें याद है अभी जब अब कपड़े हम लोग को कितने आराम से मिल जाते हैं, स्टिच्ड गारमेंट्स, राइट, एंड बहुत सारे एक मास प्रोड्यूस्ड आपकी आउटफिट्स आती हैं और आप उसमें से, विच मेड लाइफ रियली इजी फॉर श्योर। बट इफ़ यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हम लोग जैसे पहले कपड़ा खरीदते थे और वो सेम 3 पीस प्रिंट जो आता था, वो हर कोई बड़े डिफरेंट तरीके से उसको अपने स्टाइल और इनर एक सेंस ऑफ, यू नो, एस्थेटिक के अकॉर्डिंगली डिजाइन करते थे। कोई 3 पीस का पूरा बना लेता था, कोई शलवार की कमीज उल्टा बना देता था, कोई कहता था 3 मैंने नहीं बनाना, मैं 2 पीस ही आई विल मेक। अभी भी होता है, बट दैट वाज वो डोमिनेंट प्रैक्टिस, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। सो अब आई थिंक एक तरह से ये भी हो गया ना कि हम मैस प्रोड्यूस लुक्स ऑफर कर रहे हैं, एंड इफ यू नोटिस most beautiful quote unquote faces look the same on the internet, right? So we've kind of taken out that concept of unique beauty, वो जो आपकी एक नाक की एक अपनी शेप होती है, आपके लिप्स का एक अपना शेप होता है, वो सब कुछ एक मोल्ड में जाता है, वो mass produced look निकल रही है, and we're all just subscribing to that look, right? मैंने ना उस दिन एक आर्टिकल पढ़ा एक इंटरनेट पे, उसमें एक कॉस्मेटिक सर्जन ने बोला हुआ था कि पहले लोग आते थे, कुछ चीज़ें उनको ठीक करानी होती थी कि मेरी नाक नोज जॉब कर दें या कुछ ये कर दें वो कर दें, अब वो फिल्टर्स के वो लेके आ रहे हैं रेफरेंस पॉइंट कि मुझे इस फिल्टर जैसा बनना है। Are you serious? तो तुम सोचो कि मतलब इस हद तक ये बात चली गई है, लेकिन पता है क्या, अब ये कॉस्मेटिक सर्जरी की मैं बात इसलिए नहीं करना चाहती, बिकॉज़ फिर वो पेंडोरास बॉक्स खुल जाएगा कि यू नो दैट फ्रीडम
कि हाँ, मेरा agency फेस है, है, एजेंसी, हाँ। मैं जो मर्जी करूँ अपनी शक्ल के साथ, राइट? तो उसमें वो सब शुरू हो जाता है। या देखो ये बात हाँ सही है कि यू नो एवरीबडी शुड गेट टू मेक द चॉइस इन टर्म्स ऑफ दैट, बट पता है मेरे कॉस्मेटिक सर्जरी पे आई विल से लाइक यू सेड आई एम नॉट वरीड अबाउट द फैक्ट कि यू नो आप किसी की एजेंसी पे क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज जस्ट लाइक समवन इज अलाउड टू एक्सप्रेस कि यू नो आई वांट टू डू दिस टू माय फेस, आई थिंक आई ऑल्सो वांट टू रिटेन माय राइट टू होल्ड अ सर्टेन ओपिनियन अबाउट इट, राइट? दैट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सेम स्पेस विदाउट जजिंग another person. I'm talking about what that means to me. And I think in terms of cosmetic surgery and all of that, the way I feel is कि ये छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है, you know, थोड़ा botox करा लिया, fillers करा लिए. अभी I think I want to make another point इसके बाद में, which we'll come to, about the pressures of what has created this need also. It's pressures of society, right? But back to this for now, कि मुझे सिर्फ ये होता है कि I think on some level I feel that we've become again so resistant to our own features that हम लोगों को pores, skin texture, ये सब चीज़ें अब बहुत बुरी लगने लगी हैं. And I've made a conscious effort कि मैं कोशिश करूँ कि मेरी clear से clear stories में शक्ल नज़र आए. Again, I don't have too much problematic skin, so yeah, I know I can never understand or someone who has like difficult skin so to say, so you know I at least try कि मैं जितनी अपनी जो मेरी reality है वो मैं सबसे ज़्यादा दिखा सकूँ in terms of you know what my actual skin looks like. अब वो सबकी अलग spectrums पे होती है, you know, some people may have skin that gives them certain challenges, वो differ करता है, and again I can't live someone else's experience, but I try कि मैं authentically अपनी दिखा सकूँ, right? So I think वो एक चीज़ है कि I just don't like this resistance that we've developed. Also, but it's easier for me to say because maybe conventionally मेरी skin एक certain तरह की लग रही है, या अभी मैं एक certain age में हूँ जहाँ for example मुझे lines वो वाले level की नहीं हुई हैं, so maybe I'll feel differently, but right now this is how I feel. The other thing which concerns me for myself is the fact that I think it's become too normal to have things injected into our bodies that we don't really understand fully. And I think मुझे ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहाँ एक चीज़ बड़ी इस तरह आती है कि this is the solution to your problems, and then 10 years later there is some research on it that says oh my god this is the worst thing in the world, now this is the new thing you should try and this is going to solve all your problems, and then repeat it again in a few years. So I'm just mindful about the fact that, you know, my sister also does the same, but I have my own sense of what I want to do with myself. So if my sister even works in the same field, and again, complete agency for people who want to try that. But I also want to have this narrative existing in parallel that here is me, I don't do these things and I am comfortable, and this space I want to retain कि अगर ये नहीं कि ओ एजेंसी का क्या और आप कुछ नहीं बोलो, we should have space to allow multiple opinions to exist around it, so that people are able to look at things and make informed choices instead of just हम एक fear में बैठे कि यार ये नहीं बोलना because ये तो एजेंसी में आ जाता है या उसकी मर्जी. No judgment, but at least create that space to have multiple opinions. And किसी level पे I also think is it really agency, or, and I think this is something again I'd like you guys to pitch in about, because again I don't know the answers to this fully myself or clearly, because हम सब ये चीज़ें हर रोज़ कुछ नए उससे सोचते हैं ना. So I feel कि is it really agency, or is it kind of we're submitting to certain ideals? Is it like we're surrendering to certain ideals? Are we claiming agency or are we surrendering? And I also feel, can we continue to have all these discussions around body image issues, self-worth issues, अगर हम उन structures को enable कर रहे हैं strongly, which kind of assist in creating those issues in the first place? मेरा इसमें फियर यही है कि आई थिंक वी डोंट आस्क इनफ क्वेश्चंस. यू नो वी दूसरों से सवाल तो करने में बड़े तेज हैं. आई थिंक वी डोंट आस्क इनफ क्वेश्चंस टू आवरसेल्व्स. यू नो व्हाई डू वी नीड थिंग्स? द व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी ये जो हम सारी बात की है इसमें क्रक्स एक्चुअली यही है कि we want to ask questions around this whole topic also, create that space. If you think about it, I think we just graduated in general to a way of living in which we kind of really look at ourselves all the time. ये जो तुम सेल्फी की भी बात करी थी, तुम देखो कोविड में जैसे हमारी जूम कॉल्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, राइट? कि आप ज़्यादातर बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते थे. बट सोचो पहले कैसे मीटिंग्स होती थी ऑफिस में, आप सामने बंदे के बैठते थे, आप सिर्फ उसको देख रहे होते थे, राइट? लेकिन अब जूम कॉल्स में क्या होता है, आप अपने आप को देख रहे होते हो, बाल सही कर रहे हो, अपने आप को कैमरा में देख रहे हो, फैमिली से भी बात करते हुए अपने आप को कांस्टेंट चेक कर रहे हो, यू नो. एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट पुलिंग द फोकस. We've introduced ourselves into our own focus so much. ये एक जनरल वे ऑफ लिविंग हो गया है.
स्मार्टफोन्स के आने से पहले, ये कैमरास के आने से पहले ये भी होता था ना कि तस्वीरें ले रहे हैं तो किसी को कैमरा पकड़ा दिया, उसने पिक्चर ले लिया, वो आ गई जैसी आ गई, वो नेगेटिव जब आएंगे और जब आपको निकलेगी एल्बम तो आपको पता चलेगा। अब क्या हो रहा है, अब तो हाथों में कैमरा है, राइट? अब तुमने देखा है कितनी सेटिंग होती है एक तस्वीर लेने से पहले, या एक तस्वीर नहीं ली जाती, वो 10-10 बार ली जाती है, बिकॉज कुछ ना कुछ इश्यूज निकल रहा है राइट उसके अंदर, और उसमें अगर आप फिल्टर्स भी डाल दें तो फिर तो। और पता है इससे मुझे एक बात याद आई कि कभी कभार ना पुरानी फोटोज देखती हूँ तो मैं कहती हूँ है मुझे ये तस्वीर पसंद थी, एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट माय ओन परसेप्शन ऑफ द परफेक्ट पिक्चर हैज चेंज सो मच। पहले मुझे बहुत सारी अपनी बोंगी तस्वीरें भी बड़ी एक्सेप्टेबल थी, वो जो रोल से फिल्म से निकलती थी तस्वीरें, आप उसमें रिजेक्ट भी करते थे कुछ, क्या है ये कितनी खराब है, वो होती थी जिसमें आपकी आंखें बंद हैं या आधा कुछ हुआ हुआ है, बट इन जनरल वी यूज्ड टू लाइक आवरसेल्व्स इन आवर फोटोज much more easily than versus now. किसी और के पर्सपेक्टिव से होती थी वो हमारे अपने क्रिटिकल लेंस से नहीं हो रही है, क्योंकि दूसरा आपको उस तरह से नहीं देख रहा है। अच्छा, do you think I'm a little off in saying that again maybe usage of these filters also impacts things outside of your phone screen? Like जैसे आपकी purchase decisions, कि अगर तुम poorly skin देख रही हो, okay, maybe you sit at home and you say यार I don't look as good, but then does it actually impact what you're buying? Are you going to look for a serum that says pore minimizing because you think that's the idea of beauty, or do you buy something like a lightening cream because the skin tone that most influencers are using is like that pink, orange, red, whatever tone, and you say okay, so this product will get me that, you know, or you want to get a certain diet because you want that face shape, you know. So do you think it actually impacts even outside of your phone? It's so much larger than just your sense of self even. Does it impact how you're spending, what you're using your money for? बहुत सॉलिड पॉइंट है यार। मैं पता क्या अभी सोच रही थी कि हमारे शॉपिंग पैटर्न्स क्या होते थे जब हम छोटे थे, राइट? हमारा किसी आई थिंक बहुत बेहतर थे वो दिन, क्योंकि हम जब बाजार जाते थे ना, हम विंडो शॉपिंग करते थे, हमारा इंटरनल कंपस हमें बताता था कि क्या चीज़ हम पे अच्छी लगेगी, क्या चीज़ हमें पसंद है, हमें क्या पसंद है। लेकिन अब क्या होता है कि अब इतनी ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है, राइट? पहले आपने 15 से 20 मिनट वटेवर आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप सिर्फ स्टोरीज देख रहे हैं, लेकिन आपकी एक अनकॉन्शियस लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट बनती जा रही है। यू नो यार इसने ये चूज़ किया हुआ है, उस पर अगर फिल्टर लगा हुआ है। अक्सर मुझे ना थोड़ा सा गुस्सा आता है जब स्किन केयर लोग दिखा रहे होते हैं या मेकअप कर रहे होते हैं, उसमें भी फिल्टर लगाया होता है, क्योंकि अब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से मेरी ये स्किन ऐसी हुई है, तो ऑटोमेटिकली आई एम जस्ट लाइक यू नो आई कुड यूज अ बिट मोर ग्लो, आई कुड यूज अ बिट मोर दिस और दैट लिस्ट विल कीप चेंजिंग, राइट? सो अब आपने एक वो इनोसेंट नहीं रहे वो 15-20 मिनट, क्योंकि अब आपने बेसिकली आप एक लिस्ट बैठ के बना नहीं रहे, बट मेंटली बन रही है। सो आई 100% एग्री कि आपके पूरा पैटर्न, आपका परचेस पैटर्न चेंज हो गया, और उसमें आपने वो इंटरनल कंपास बेसिकली आपका लूज हो गया। नाउ यू डोंट नो व्हाट यू लाइक, राइट? नाउ यू नो व्हाट लुक्स गुड ऑन समवन एल्स, बिकॉज दैट इज द स्टैंडर्ड दैट यू सेट फॉर योरसेल्फ, एंड नाउ व्हाटएवर लुक्स गुड ऑन दैट पर्सन, you want that to look good on you. उसमें disappointments भी होती हैं। पता है दो चीज़ें आई थिंक it just made me realize कि मैंने दो चीज़ें अपने बारे में जो चेंज नहीं, I became conscious कि मुझे ऐसे नहीं करना। एक चेंज की, एक कॉन्शियस हुई। एक थी पर्सनल उसके लिए और एक थी फॉर माई प्लेटफॉर्म। पहली चीज़ जो मैंने एक रियलाइज़ की ना, वो विच वॉज दैट इतना आई इंट्रोड्यूस सो मच क्लटर इन टू माई लाइफ, बिकॉज आई रियलाइज कभी कोई बात कर रहा होता था ना, मैं ठग स्क्रीनशॉट लेती थी, हाँ ये प्रोडक्ट मैं खरीदूंगी, और फिर मैंने बड़े अरसे बाद देखा फोन में बस स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट जमा हुए, मैं ये चीज़ ले भी नहीं रही हूँ, क्लटर भी क्रिएट कर रही हूँ, एक काइंड ऑफ ब्रेन में शायद एक वो भी इंक्रीज कर रही हूँ कि मेरे पास इनफ स्किन की नीड्स की चीज़ें नहीं हैं, यू नो, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी लेजी अबाउट लेट्स से स्किन केयर। मेरे पास हमेशा होते 2-3 है, बट एक कांस्टेंट वो रहता था कि यार बाकी दुनिया कह रही है 10 प्रोडक्ट चाहिए और आपको लगता है कि आप वहाँ नहीं, आपने नहीं लिए हुए ना, तो वो लगता है कि आई एम नॉट डूइंग थिंग्स राइट। एक कांस्टेंट वो एक चीज़ रहती है। तो आई जस्ट स्टॉप डूइंग इट, आई स्टॉप स्क्रीन शॉटिंग most products and I understood what my needs were and मैंने कहा बस मैं उसके हिसाब से लूंगी, मैं ये पीछे ये नहीं जाऊंगी। तो I reduced a lot of clutter also. दूसरी चीज़ जो separate from this what I'm saying is कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक चीज़ प्रैक्टिस करनी शुरू की। पहले मैं करती भी नहीं थी, but I realized a lot of products that I was getting for like collabs जो कि मैं नहीं लेती, कभी नहीं लिए, लेकिन उसकी एक रीजनिंग मैंने सोलिडिफाई की अपने दिमाग में कि दे वुड कम फॉर के एंटी रिंकल, रिमूव द लाइंस फ्रॉम योर फेस, यू नो, एंड काइंड ऑफ रिवर्स एजिंग। एंड आई सेड नो, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दीज प्रोडक्ट्स और टॉक अबाउट देम, आई एम नॉट यूजिंग देम और आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट देम बिकॉज दे डोंट फॉल इन लाइन विद व्हाट माई पर्सनल ideology of beauty is. Okay, sure, I'll use a hydration serum because I believe the way हम लोगों का lifestyle होता है, अब हम लोग हर वक्त या तो AC में बैठने की कोशिश कर रहे होते हैं या heating में बैठे होते हैं, dries out our skin a certain way, तो I still say कि हाँ मुझे hydration का product जैसे चाहिए, तो I will
I'll talk about that. But I am okay with aging a certain way, so I'm not going to get busy with talking about something that wants to kind of take away that effect of बिल्कुल. aging. So I think in terms of purchase decisions also, I became aware of कि मैं कौन सी चीज़ लोगों को बता रही हूँ कि मैं बोल तो दूँ कि हाँ हाँ ये 10 प्रोडक्ट हैं आप यूज़ कर लो, बट if I am also contributing to that whole culture, क्या बोल रहे हो ये एक्स रिवर्स करो एजिंग, ये लाइनें हटाओ, ये वो करो, तो मतलब you're also part of the equation, right? बिल्कुल, बिल्कुल. So anyway, I think these two things I have made life easier for myself and also made me feel better about how I use the internet. And also, even if there is no legal whatever framework around the influencer culture, you've made that for yourself. हाँ. You've created that framework for yourself कि this मैं दुनिया तो नहीं बदल सकती पूरी Instagram की, but मैं अपनी स्पेस बदल सकती हूँ. क्या बात है. बस जी अभी जरा एक सेकंड. Thank you. Only a friend will make you feel better about certain choices. No, but really, doesn't नहीं, that make हाँ. sense that it makes you cannot sense, change the हाँ. whole culture, and I think that's true in real life as well. हाँ, कि हम हाँ. दुनिया नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपनी circle of influence बदल सकते हैं. और हम करते हैं ऐसे, हम अपने कितने सारे प्रिंसिपल सेट करते हैं इन लाइफ एंड अदर थिंग्स आल्सो. दैट्स सो ट्रू. क्या आंसर है? ना यूज करें फिर फिल्टर्स. मतलब कहने को तो ऑडियंस आल्सो डजंट मेक इट इजी, बिकॉज इफ आई काइंड ऑफ लुक एट नाउ द अदर साइड ऑफ द होल थिंग, इट्स लाइक अगर आपको वही वाली बात, अगर आपके मुंह पे पिंपल आ गया तो लोग फौरन बोलेंगे पिंपल क्यों हो गया, कैसे भाई कैसे हो गया, इंसान है हो गया पिंपल, यू नो. आपने वेट पुट ऑन कर लिया या वेट कम हो गया है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे ऊपर, तो यू नो लाइक कमेंटिंग ऑन थिंग्स लाइक दैट. एंड व्हेन समथिंग चेंजेस अबाउट योर अपीयरेंस, everybody knows what's going on with their, everybody agar nahi to most people know what's going on about their appearance, and I think people don't make it easy. And I feel also on some level women just can't win, because agar puri conversation ko dekho to if you use a filter कुछ गलत है, अगर आप नहीं यूज करते तो आपकी शक्ल तो बहुत बकवास है, आप क्यों ऐसे आ गए हो, हाउ डेयर यू कम विद योर ओरिजिनल फेस, यू नो, मेकअप लगा लो, स्किन सही कर लो. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वुमेन कांट विन आइदर वेज. वील क्वेश्चन देम इफ दे यूज फिल्टर्स, वील क्वेश्चन देम इफ दे डोंट यूज फिल्टर्स. And maybe I feel, कि people maybe started using filters when they became available. Maybe someone said कि यार, you know, I don't want to hear this today. I'm not having a good day. बिल्कुल. So, oh, there's a filter available. Let me just use it, and it just makes things easier. And then it was easy. And so they said, okay, the next day, and then it transformed into kind of like something that they didn't think about. So maybe it's also that external pressure which I mentioned earlier कि अभी मैं बात करूँगी, maybe that's also what created, it's like a vicious cycle almost, right? और यार कंटेंट क्रिएटर्स भी इंसान है, ठीक है. उनकी ज़िंदगी, उनकी जो जॉब है, उनकी जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक नॉर्मल इंसान की नहीं है. वो लोग कहते हैं कि हाँ दिस इज़ योर वर्क, एंड वो कहते हैं दिस इज़ आवर वर्क, बट कौन सा दुनिया में ऐसा काम है जिसमें आपको दुनिया रोज देख रही है. माई फ्रेंड्स हु गो टू ऑफिसेज, उनके सिर्फ कॉलीग्स उनको देख रहे हैं, उनको पूरी दुनिया उनको नहीं देख रही, ठीक है. सो पीपल आर वाचिंग यू, एंड आई फील कि दिस इज वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ लाइज विद द ऑडियंस, के इफ यू वांट ऑथेंटिसिटी देन आप उस ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करें, ठीक है. और इसमें मैं थोड़ा सा एक पर्सनल, I am not 100% comfortable talking about it, but I think I've talked about it on my blog. But एक जैसे चीज़ है hair loss, right? So I have had immense issues with hair loss, and I've had 3 kids, and postpartum hair loss didn't help. And with time, and I used to have, so I've seen both sides. I used to have really beautiful, luscious, thick hair, and now I'm not left with much. And I know that when there are days, and they're like cycles, कभी बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, whatever. And I feel like when you are going through something traumatic like acne or hair loss or anything like that, you know, ठीक है, आपको किसी के बताने से कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है टू देन फेस द वर्ल्ड, स्पेशली इफ यूर अ कंटेंट क्रिएटर, टू जस्ट शो अप एज यू आर. But it takes one unkind, one cruel comment from someone who's just sitting wherever and just have their, you know, a smartphone in their hands and just ruining someone's day by saying कि अच्छा बाल कब हो गए. So now it's two ways. So अब तुम जो कह रही हो करें ना करें, इसमें सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स या जो लोग फिल्टर्स यूज़ करें सिर्फ उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मुझे याद है कि जब मेरा पिछले 4-5 महीने पहले, आई थिंक इट वाज रियली बैड. ऐसा मैंने नहीं जाना स्टोरीज पे, मैं क्यों जाऊँ, लाइक इट वाज जस्ट, आई वाज जस्ट मे बी प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ. बट देन वन डे आई वाज लाइक क्या फ़र्क पड़ता है, लेट मी जस्ट गो एंड सी. And I talked about it, and you know, maybe because my following is very small and maybe my following is really nice, I didn't get any mean comment, but that fear was there. And मैं वही बात तुम्हें कह रही हूँ ना कि even in my 40s, even after you know, doing so much work on my own limiting beliefs, I still felt that कि यार
this is something very vulnerable, right? And someone will say something, and now my struggle is not to, have that comment ruin my day. But I don't know. I don't know. I can't say. I can have this theoretically, this thing in my mind कि यार, what can a mean comment do to me? मैं तो जानती भी नहीं उसको, but it can. Yes, and not absolutely. everyone is at that same level of self-acceptance, and not everyone is at the same level of vulnerability, right? So इधर मैं कहूँगी कि हम जितना मर्जी डाल दें onus content creators पे, a bigger onus is now on the audience. It's now on everyone to, ensure Every individual, that the space that exists where people can show up as they are. And there's a lot of unkindness on the internet. I keep looking at bloggers who share comments from random strangers. They're downright cruel and unkind. I think हम लोग wrap up करते हैं इस discussion को. We'd love to hear your points related to what we were saying, or even if there's something else you thought of while we were talking कि कोई बात आई है दिमाग में, so please share. I think दुनिया को करेक्ट करते करते भी बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक. सो आई विल जस्ट से दैट आई थिंक द वन थिंग यू कैन मैनेज द बेस्ट इज़ योर ओन सेल्फ. तो इंसान अगर वही वाली बात जो कि आप अपने आप के ऊपर पहले फोकस करके शुरू करें, बिकॉज सोसाइटी इज़ वॉट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ होम्स इन माई ओपिनियन, एंड वॉट इज़ अ होम, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल इन दैट होम. तो अगर एक ही घर के 5 फर्द ही अपने आप को एक सर्टन रिन्यूड क्या कहते हैं एजेंडा फॉर लाइफ के साथ शुरू करें कि हम इस तरह अपने आप को भी ट्रीट करेंगे, इस तरह अपने सराउंडिंग को भी ट्रीट करेंगे, तो आई थिंक वी कैन जस्ट क्रिएट बेटर चेंज and make other people's lives also easier. So I'll just say understand your own self-talk when it comes to beauty. Value your entire being. Make the ecosystem better by not holding people to beauty standards of a certain type or marginalizing those who exist outside of it. Understand your own talents and make sure you know who you're following on social media and how they make you feel. ये बात भी सच है जैसा मैंने शुरू में बोली थी, that the external environment is still very discriminatory and a bias certainly exists for certain types of looks and certain types of beauty features, and that is a very difficult journey for a lot of people. वो system में issues exist करते हैं. We should have maybe next time we can have a chat about how to go about talk about this from an ecosystem point of view and not the individual. But for now I will just say that really value yourself and focus on understanding what your own idea of beauty is, and not have it belong to someone else. I think I'm end पे आ चुके हैं, but I really want to say we are so excited right now because we are closing season 1 of the Friday catch-up. I can't believe हमने कर लिया execute. फिजा एक झप्पी तो बनती है, multiple झप्पीज बनती है, but एक on camera बनती है. I loved doing this with you. There is no one else I can imagine having this like face-to-face conversation with right now. And I think I'm just so glad that you were also on board and that we could like talk so Make honestly. it work after COVID, the travel opened, and I really want to thank you for giving me this opportunity because this is something that I would have never done. ना तुमने मुझे comfort zone से निकाला नहीं, तुमने मुझे खींच के जरा सीन में तो आओ. But honestly, I think हमने इतना मजा किया है since we started talking about it. हर वो चीज़ planning, ये ticket book करके जब मुझे अपना screenshot इसने भेजा, your flights are booked to Sydney, how exciting that was. And you were tracking my flight. Yeah, menus decide करना हमारी ये शाम की चाय के setup के लिए, set की बातें करें, मैं इसको तस्वीरें भेज रही, फिर इसने आके उसको किया, कपड़े decide करना calls के ऊपर and what not. It has been a blast. And then finding Tapal as our brand partner, enjoying the Tapal दानेदार whole vibe in different variants. And the green tea, yes, and all the flavors. It just made everything so perfect. Mashallah, we're like really thrilled with how it went. Now we really hope that you also enjoyed it. हमें इस episode का भी बताना, but please do tell us if you enjoyed the season. We also want to know what would you like to listen to for the next season, right? मतलब क्या सुनना है और किन चीज़ों पे बातें करें. बस हमें सब कुछ बता दो, सब बता दो. और क्योंकि हम लोग इतने अरसे से इसके बारे में पहले डिस्कशन कर रहे हैं, फिर हमने रिकॉर्डिंग भी की, तो इट वाज नॉट लाइक कि हमने बहुत कोई रिहर्स किया हुआ था, हम लोग बस बोले चले जा रहे थे. एंड नाउ एट द एंड ऑफ इट आई एम जस्ट लाइक आई डोंट नो हाउ इट विल बी रिसीव्ड. यू जस्ट सीन वन वर्जन ऑफ इट, सो we'd love to hear your feedback on how we did. और different सब बताना, how were the outfits, how was the menu. Outfits जो हमारी wardrobe से निकल के आ रहे हैं. So तो है भाई फिजा, करें wrap up. Oh my God, yes. I think there was one moment when we were starting it. Yes. And there's one moment when we are finishing it. Can't believe it. Thank you so much for taking out time for us for so many episodes. Can't wait to see you guys again. Look after yourselves.
बाय।